आज हम इस बुक को कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है पावर ऑफ वन थॉट। विकी शिवानी का बुक है। इसका हम अभी तीसरा चैप्टर आप शुरू करेंगे। शेप योर लाइफ वन थॉट एट टाइम। शेप योर लाइफ वन थॉट एट टाइम। So you walk into a showroom to buy a smartphone uh, and say to the salesman, "All I am looking for the simple phone only for calls and messengers." She shows you a new model and you instantly like it. She starts demonstrating how to use it, but you stop her and say, "That's all right. I will figure it out eventually. Just pick it." You're happy about the purchase. All is well until a month later. एक महीने के बाद वो आपका मोबाइल जो है फ्रीज हो गया एंड यू हैव नो आइडिया व्हाट टू डू. You panic and rush to the showroom where you give that saleswoman an earful. She inspects the phone, restart it, then it works like the charm. You wish you had learned a thing or about two about it, especially when she had offered to teach. That would have saved your energy and time. This applies to how some of us live. इस तरह हम जिंदगी जीते हैं. When life is जब स्मूथ जाती है तो we do not pay attention to the several aspects working in our favor. But on the day something goes wrong, it is a different story altogether. We struggle to deal with that obstacles, failures, and setbacks. We start panicking and remains clueless about the solution. We go to the other people for help and support. In this book, we are trying to analyze why life is the way it is. तो लाइफ हमारी भी इस तरह चलती है. Making inroads into the world behind our eyebrows, we are now aware of our inner world beliefs. हमें पता चल गया है हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारे थॉट्स क्या हैं, हमारी फीलिंग्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, कर्मास क्या हैं, एंड कनेक्टेड टू आवर आउटर वर्ल्ड ऑफ द अचीवमेंट. वो हमारे आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं. पोजीशंस, roles and relationship. Positions, roles, relationship. The inside story. अंदर की स्टोरी क्या है? There is an extremely subtle and invisible mechanism within each of us that guide us to think, feel. इस तरह हमारे अंदर में भी इनविजिबल मैकेनिज्म होते हैं within each of us that guide us to think. सोचो, फील करो एंड बात करो, बिहेव करो. सोचो, फील करो, बात करो, बिहेव करो, रिस्पॉन्ड इन सर्टेन वेज. इस तरह हम सर्टेन वे में रिस्पॉन्ड करते हैं. दीज इनर वर्किंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ आवर लाइफ पेन्स आउट. इस तरह हमारी लाइफ चलती है. आवर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, दे डिटरमाइन व्हाट हैपेंस टू अस एट एवरी मोमेंट. So our lives follows a very powerful and constant internal process, flow which goes like this. इस तरह हमारी लाइफ चलती है. तो ये एक टेबल दिया गया है, फ्लो चार्ट दिया गया है. उसमें बता रहा है कि एट एवरी मोमेंट आवर माइंड इज क्रिएटिंग थॉट्स. हर मोमेंट में हमारे माइंड थॉट क्रिएट कर रहा है. अ सीरीज ऑफ थॉट जो है ना वो फीलिंग्स पैदा करते हैं. और ऑल आवर फीलिंग्स अबाउट अ पर्सन और सिचुएशन for a period of time develop our attitude towards them. वो फीलिंग्स जो है जो हमारी थाट से बनती है वो किसी पर्सन के बारे में होती है या सिचुएशन के बारे में. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप अवर एटीट्यूड. वो हमारा एटीट्यूड डेवलप करती है टुवर्ड्स देम. पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में वो फीलिंग्स एटीट्यूड डेवलप करती हैं. सो एज इज अवर एटीट्यूड सो विल बी अवर एक्शन. जैसे हमारे एटीट्यूड है इस तरह हमारे एक्शन होते हैं. इन द फॉर्म ऑफ आवर वर्ड्स एंड बिहेवियर. वो एक्शन जो है हमारे वर्ड्स के फॉर्म में आते हैं या बिहेवियर के फॉर्म में आते हैं. सिचुएशन एंड सो
एनी एक्शन डन रिपीटेडली बिकम्स आवर हैबिट्स और संस्कार। जब हम बार बार वो एक्शन लेते हैं, वो बोलते हैं या बिहेव करते हैं, वो हमारे हैबिट या संस्कार बन जाते हैं। ऑल ओवर संस्कार पुट टुगेदर, सारे संस्कार हमारी शेप और पर्सनैलिटी बनाते हैं। सो एज दिस पर्सनैलिटी गोज आउट इन टू द वर्ल्ड एंड डील्स विद एवरी लाइफ एट एवरी स्टेप, वी आर क्रिएटिंग अवर डेस्टिनी। इस तरह वो जब हमारी पर्सनैलिटी पूरी दुनिया में जाती है, हर लाइफ में, वो हमारी डेस्टिनी क्रिएट करती है। स्टार्टिंग विथ आवर थॉट्स, जिस तरह हम स्टार्ट करते हैं, नोटिस हाउ ऑल द एलिमेंट्स लिस्टेड अबव आर कनेक्टेड टू ऑल द वे टू आवर डेस्टिनी। तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे डेस्टिनी बनाते हैं। वर्किंग in tandem, each stage has casting effect that create a flow। इस तरह फ्लो बनता है। जैसे हमारे थॉट्स हैं वो फीलिंग बनाती है, फीलिंग हमारे एटीट्यूड बनाते हैं, एटीट्यूड हमारे एक्शन बनाते हैं, एक्शन मतलब वर्ड्स या बिहेवियर। एटीट्यूड मीन्स टूवर्ड सिचुएशन और पीपल। इस तरह हैबिट जो है हमारी बनती है, वो संस्कार बनते हैं, संस्कार हमारी पर्सनैलिटी बनती है, और पर्सनली हमारी डेस्टिनी बनती है। तो ये हमारा चक्कर है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट, मैं जो हूँ अपने थॉट्स का क्रिएटर हूँ। आई चूज देम, मैं चूज करता हूँ। आई क्रिएट देम, मैं क्रिएट करता हूँ। वी नीड टू कीप रिमेनिंग अवर सेल्फ ऑफ दिस टाइम एंड टाइम अगेन। वी नीड टू इम्बेब दिस ट्रुथ to deep into awareness that we practically experience the thought creation process in every scene of life. So in response to the same situation, different people create different thoughts. Different people different thought create करते हैं। The situation does not create our thoughts. Situation हमारे thought create नहीं करती। We create our thoughts in response to the stimulus or situations। जो हमारे स्टूडेंट्स को मिलती है, सिचुएशन आती है, तो हम क्रिएट करते हैं। सपोज अ फैमिली मेम्बर्स नीड्स फाइनेंशियल हेल्प एंड यू लेंड हर मनी। कोई फैमिली मेम्बर है, फाइनेंशियल हेल्प चाह रही है, आप उसको मनी देते हो। यूर डिफरेंट चॉइस ऑफ व्हाट टू थिंक व्हाइल हेल्पिंग हर। अभी आपके जहन में क्या आ रहा है? वन ऑप्शन इज टू थिंक, आपको सोचना है जस्ट बिकॉज आई एम वेल्दी, ये सुना है मैं अमीर हूँ, मैंने उसकी मदद की। एवरी वन वांट टू मी टू हेल्प हर। This thought is not a good one, ये अच्छा नहीं है। Instead, you can create a better thought such as I am happy to be of help। मैं खुश हूँ, आपकी मदद करूँगा। My blessings are always with her, मेरी दुआएं उसके साथ ही। I am certain she will overcome her problem and reach her goal। इस तरह वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो अपनी गोल पे पहुँच जाएगा। So, can you see the difference? क्या आप डिफरेंस कर सकते हैं? इन द फर्स्ट केस, द सिचुएशन ओवर पावर योर स्टेट ऑफ माइंड एंड एज अ कॉन्सिक्वेंसेस इन्फ्लुएंसेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। इन सेकंड, योर माइंड बिकम्स मोर पावरफुल देन द सिचुएशन। इन आइदर केस, however, you are the creator of the all thoughts, not the situation। Applying this powerful realization transforms us from the victim to master of our circumstances and lives। So we are not called human beings, although we are constantly engaging in doing one thing after another for an entire lifetime. We are called human beings because we are beings who influence the doing. We are not a doing who influence the being. Every morning we mentally organize our thoughts by asking ourselves, what should I do today? Now we just need to add another dimension to this flow. How should I be? Let us start creating thoughts of how we will be while doing any anxiety activity, while we get ready for office, जब हम ऑफिस जाते हैं, in the traffic while we work in the project, or chair our team meeting with we returns home and spend time with our family. But if you have a meeting to chair, think and realize how you are going to be in the meeting with while executing your list of the things to do. I remain calm. I listen patiently. I state my views respectfully. I stand for the what is right. I empower others.
think right. So thought trigger feeling, जो thought है हमारी feeling trigger करती है, हमारी thoughts हमारी feeling trigger करती हैं. Thoughts, feelings, attitudes वही है ना. इस तरह ये हमारा फ्लो चार्ट बनता है. संस्कार, पर्सनल डेस्टिनी. थॉट्स आवर क्रिएशन, थॉट्स हम क्रिएट करते हैं. सीरीज ऑफ थॉट्स गिव राइज टू फीलिंग्स एंड इमोशंस. सो हैप्पीनेस इज अ फीलिंग, peace is a feeling, love is a feeling. These are feelings we experience because of the thoughts we create. We succeed at times, fall at other time. People obey us at us time, disobey us at other time. We receive compliment at times, criticism at other times. We are healthy at times. We feel aches or pain at other times. That is certain. When we do when we do not focus on our inner world, how we feel becomes dependent on the outer circumstances, and hence our feelings start to fluctuate. If a situation is favorable, we feel great. Otherwise, we become overwhelmed by the pain, anxiety, irritation, anger, or fear. We are often aware of our feelings, but not our thoughts. Sometimes we want to change how we feel, but are unable to do so because feelings are created as an outcome of thoughts. All we need to do is reflect on the kind of thoughts we have created and change those thoughts. It is impossible to change our feelings without changing our thoughts. So consider two examples in understanding how feelings are connected to thoughts. Clear thought, let me eat my favorite chocolate. Notice how this thought makes you feel pleased. Assuming you like chocolate, when we unwrapping the chocolate bar, suppose you think it is generous of my friend to gift me a whole box of chocolate. This thought makes you feel grateful and cared for. As you eat it, suppose create thoughts delicious. It is just the right amount of the cocoa. This thought triggers happiness and satisfaction. Next, if you think, let me hide it, I do not want anyone else to eat them, you will experience uncomfortable feeling of the greed and insecurity. Recall an argument you had with a friend. How create a thought? आप कैसे create करते हो thought? She was wrong and she was too egoistic to admit her mistakes. You feel angry and upset. Then, if you think I did the right thing by proving her wrong, now everyone knows I am innocent. These thoughts make you feel delighted and satisfied. If you continue thinking, but I did not like how it ended our friendship of 2 years and literally maybe I was rude, you can see how these thoughts make you feel unhappy and guilty. In both scenarios, examining how our different thoughts generate different feelings and emotions. Can distraction help you heal? So you might ask when I can simply distract my mind to cope with negative and uncomfortable feelings, why should I make the effort to change my thoughts? Let us an example to understand why this will not work. A person headed to movie theater, slip and fall, fail, hurting his knee. The wounded obviously hurt, but he thinks I am already late to the theater. I am sure the movie will divert my mind from this pain. Sure enough, his attention to distracted for the next 3 hours. After the movie end, he senses pain again. He thinks, "Wow, I had forgotten about this wound. Let me spend some time with friends. I will feel better." The wounded knee occasionally bother him, but the continues to ignore it. By the end of the day, while walking home,
He find the pain too sharp to bear. He examining the injury and find a significant increase in the swelling and redness. He regret not attending to the earlier. Many of us deal with the emotional wounds. हमें सब लोगों को wound है वैसे in a similar way. By the end of the day, sometimes there's a lot on our mind. दिमाग पे होते हैं thoughts, feelings of the stress, fatigue, थक जाते हैं, anger, distraction, anxiety, and so on. But instead of the hearing them, we prefer to away from our mind negative inner chatter. We distract the mind so that somehow we start feeling bitter. Today we have so many distractions at our disposal that we easily shift from the one to next. We seek the relief and relaxation mostly through the phone. हम कहाँ से ये टेलीविजन पार्टीज शॉपिंग बुक्स holidays, substance addiction, and so on. This is the good juncture for the self-reflection. So we see relief realization mostly through the phone हम यूज़ करते हैं, टीवी पे देखते हैं, पार्टीज में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, हॉलीडेज में जाते हैं, एंड सब्सटेंस एडिक्शन नशा करते हैं, सो ऑन. दिस इज द गुड नेचर ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन. ये हमारा सेल्फ रिफ्लेक्शन है. सो व्हेन डिड यू लास्ट सिट विथ योर सेल्फ फॉर 15 मिनट्स. आप कब जो है डूइंग नथिंग, ऐसा है 15 मिनट कब ऐसे खुद के साथ बैठे हैं. आर यू कंफर्टेबल इन योर ओन कंपनी विदाउट द नीड टू रीच फॉर योर फोन. क्या आप खुश होते हैं ना आपके पास फ़ोन हो, ना टीवी हो, ना कोई रिमोट कंट्रोल हो या बुक हो. व्हेन यूर अलोन, जब अलोन होते हैं, डू यू फील लोनली. आप क्या लोनली फील करते हैं. Being with yourself means being comfortable with the thoughts. खुद के साथ कंफर्टेबल है जैसे आपके थॉट्स आर कंफर्टेबल हो एंड फीलिंग इन अवर माइंड. अगर आप अकेले बैठ जाते हो तो इसका मतलब ये आप अपने थॉट के साथ कंफर्टेबल हो, फीलिंग के साथ इन योर माइंड. व्हेन यू आर फीलिंग रिलैक्स्ड, जब आप रिलैक्स हो, काम हो एंड पीसफुल हो, you will easily be able to sit with yourself. In those moments you can be alone but never lonely, because you will enjoying being in company of a clean mind and pure vibration. Often we uplift a close friend's mood and they lift ours. तो हम क्या करते हैं, दोस्तों को मिलते हैं, वो हमें लिफ्ट करते हैं. Now we need to do that with ourselves because our goal is to achieve emotional independence. हमारा गोल है इमोशनल इंडिपेंडेंस अचीव करना. सेल्फ काउंसलिंग इज द वैल्यूएबल स्किल टू मास्टर. सेल्फ अपने को काउंसिल करना भी स्किल है ये. देयर आर सिंपल स्टेप्स टू डू इट. तो इसके सिंपल स्टेप है. आप कौन से हैं. राइट योर थॉट्स अबाउट द इशू ऑन अवर माइंड. आप अपने थॉट लिखें अपने इश्यूज पे, जो आपका इशू चल रहा है. एंड आंसर दो थॉट्स एज इफ यू आर कंसोलिंग समवन. आप उस थॉट को आंसर करें जैसे आप दूसरे को काउंसल करें. विथ सब्र से बोलें, सब्र, लव एंड एम्पैथी. सब्र, लव एंड एम्पैथी. स्टेप 2, you may have to repeat this a few times because at timers the mind keeps going back with and forth and need time to heal. ये आप अपने साथ रिपीट कर सकते हैं. अपने थॉट लेके इश्यूज पे उसको काउंसल करें. डिस्ट्रक्शन डू नॉट हील. डिस्ट्रक्शन हील नहीं होती. इन टाइम डज नॉट हील. टाइम जैसे हील नहीं होता. इट इज विथ it is we which create our emotional wonders. So it is we who need to heal them. An emotional wound is caused by wrong thoughts. Emotional wound है वो हमें wrong thought आते हैं. It can be healed with the right thoughts. For instance, I am good for the nothing is a thought that hurt. I am powerful soul who can do anything.
आई डिसाइड टू इट्स थॉट दैट हील। फीलिंग डेवलप्स एटीट्यूड, हमारी फीलिंग एटीट्यूड डेवलप करती है। सो वही है फ्लो चार्ट कि हम जब थाट क्रिएट करते हैं तो सीरीज ऑफ थाट्स फीलिंग्स क्रिएट करती हैं, और फीलिंग्स जो है ना एटीट्यूड क्रिएट करता है टुवर्ड्स पीपल और सिचुएशन। फिर एक्शन में आता है वर्ड्स और बिहेवियर, तो फिर वो हैबिट में बन जाता है। हैबिट हमारे संस्कार बन जाते हैं, संस्कार पर्सनैलिटी बनती है, पर्सनैलिटी डेस्टिनी बनती है। डू यू सी, आपने क्या है गिलास देखा है इन हाफ फुल और हाफ एम्प्टी? दिस क्वेश्चन कैन बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एन एटीट्यूड चेक। Attitude means everything is a popular saying for the reason. If there is one aspect of our personality which instantly reflects in our relationship, friendship, or work or health, it is our attitude. Attitude is a mental filter है ये, through which attitude क्या होता है, ये mental filter through which we perceive and experience the world। हम perceive करते हैं, experience करते हैं। It is developed based on how we feel ourselves, other people's, object, events and situation life। Our attitude is created by our feelings। हमारा attitude हमारी feelings पैदा करता है, which in turn we created by, or which in turn are created by our thoughts। So our attitude does not just come to us; it is our creation and it affects every dimension of our life। People are who they are and situated or how they should be feeling a certain way for the same people and situation over a period of time develop our attitudes towards them। So our attitude decide whether we accept, reject, क्या हम एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट रेस्पेक्ट करते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते हैं पीपल्स एंड सिचुएशन। देयर इज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द हेल्दी and unhealthy attitude that all of us carry: friendly, arrogant, pleasant, indifferent, grateful, self, and so on. Consider these examples. I am certain that the team will perform well under him। मैं सर्टेन हूँ कि ये टीम अच्छी करेगी, टीम अच्छा खेलेगी। ये ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है कि मैं सर्टेन हूँ कि ये टीम अच्छा खेलेगी। When you becomes fearless, life becomes limitless। जब आप fearless होते हैं तो fearless ambitious attitude, ये होता है ambitious attitude। My door is open to anyone who need help, caring and kind attitudes। ये caring and kind attitude है। I cannot stand people who behave like they are always right। I cannot stand people who behave like they are always right means dismissive attitude। मैं उनके साथ नहीं खड़ा होता जो कहते हैं हम सिर्फ जो है ना सही है बाकी गलत है, तो ये है dismissive attitude। That is just how I am, that is just how I am, you take it or leave it। Arrogant attitude, that is just how I am, ये जो है ना बस ऐसा ही मैं क्या करूँ, तो आप या मुझे अपनाओ या मुझे छोड़ दो। ये एटीट्यूड जो है ना एरोगेंट एटीट्यूड है। आई ऑर्डर्ड चॉकलेट फ्लेवर बट दे सर्व्ड वेनिला। मैं उसको चॉकलेट बोला, वो वेनिला है। आई एट विदाउट मेकिंग अ फस, मैंने आवाज़ नहीं की। इजी गोइंग एटीट्यूड। आवर एटीट्यूड इम्पैक्ट द तो हमारा जो रवैया है वो इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ वे मोर डीपली देन वी रिलायबल।